going to start a series of lecture on enzymes. In fact, we are going to start the crash course of the enzymes, and this crash course comprises of only three lectures, and this is the lecture 1 of the crash course of the series of 3 lectures. So in this lecture we are going to cover, this is the lecture 1, and we are going to cover the chapter outline, classification, properties of enzymes, factors affecting enzyme activity, active site and the properties of the active sites. We will see the enzyme inhibitions and different modes of inhibitions, mechanism of the actions of the enzymes, and the important MCQs in the last of this lecture 1. So let's start from the overview. If you see the enzyme portion in your book, it will cover the following topics. That is, this is the overview of the enzymes, classification, properties of active enzymes, properties and the active sites of the enzymes, and then factors which are affecting enzyme activity. You will see the active site and the properties and the enzyme inhibition, and then you will see mechanism of the enzyme actions and regulation, and in the last, a very important portion, that is application of the enzymes and the enzymes in the clinical diagnosis, and number of other 2-3 topics. So in this first lecture we are going to cover the classification, properties, factors, active site and the properties, inhibition, and the mechanism. Almost the full circle, except the application and the few related topics which we will cover in the second and third lecture section. Starting from the classification, let's start. So classification of the enzymes can be classified into following groups, that is the oxidoreductases, number 1 class of the enzyme. Number 2 is the transferases, and then hydrolases, lyases, isomerases, and ligases. These are the important 6 classes of the enzymes in which all the enzymes can be classified. Now we will see the different properties according to their names and their classes, and the examples of each of the class of the enzymes. So oxidoreductases are the type of enzymes which conduct the oxidation reduction reactions, and the one of the very important example is the alcohol dehydrogenase. Then transferases, these are the catalyses. These group of enzyme catalyze the transfer of the functional groups, and these functional groups include phosphate, methyl groups, etc. And one of the example is hexokinase. It can be glucokinase as well. So hydrolases are the group of enzymes in which they conduct the hydrolysis with the help of water of the different compounds, for example the lipases. And then lyases, these are the group of enzymes which can cleave the bond between carbon-carbon, carbon-oxygen, and carbon-nitrogen. For example, the aldolases are the group of enzymes which categorize in this subclass of the enzyme, that is lyases. And the isomerases is in fact the group of enzymes which conduct isomerization of the reactions, for example retinol isomerase. And the ligases are the enzymes which are also in the DNA ligase, like the group of enzymes which form different bonds. So they are involved in synthetic reactions which join together the different groups. And such type of enzymes include examples succinate thiokinase. So these are the 6 classes of the enzymes, which are oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase, and ligase. And at least one of the examples of each class of the enzyme is provided here. Now we see the important points from the classification. If you can remember these points, you will be able to attempt most of the MCQ questions from the enzyme portions, classification especially. So oxidoreductases, very short, very briefly. Oxidation reduction reactions, they conduct oxidation reduction reactions. Alcohol dehydrogenase is one of the example. Cytochrome oxidase is the second example. Transferases, they transfer the functional group. Hexokinase, glucokinase, transaminase, and phosphorylase, these are the examples. Hydrolases, these are the bring out the hydrolysis with the help of water. For example, lipases, esterases, pepsin, and ureases. Then you have lipases. These are the bond cleavage enzymes. They break up the bonds, for example, carbon-carbon, carbon-oxygen, carbon-nitrogen, and the examples are aldolases and fumarases. Then you have isomerases, the name itself expressing isomerization. They conduct isomerization of the different compounds, for example, retinol isomerase, ketoisomerase, phosphohexo
isomerase, these are the few examples of the isomerases, and the last one is ligases. They are involved in the making of new bonds or synthetic reactions, bond making. Succinate thiokinase or acetyl CoA carboxylase. स्टूडेंट्स आपको इसमें एमसीक्यूज में दो तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं. एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल हम पूछते हैं कि अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज belong to which class of the enzyme, या alcohol dehydrogenase belong to only, एंड नीचे आपको ये 6 या 5 डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई होंगी. या द अदर वन इज, आपको क्या सा पूछ सकते हैं कि ट्रांसफरेजेस आर या ऑक्सीडोरिडक्टेसेस आर या ऑक्सीडोरिडक्टेज एग्जाम्पल इज. नीचे आप पेप्सिन, यूरिएज, एल्डोलेज, hexokinase, alcohol dehydrogenase. The answer will be alcohol dehydrogenase. And if vice versa, अगर ये पूछा जाता है alcohol dehydrogenase belong to, तो oxidoreductase. So आपको examples जो हैं, ये main examples आपको याद करनी पड़ेंगी. You will be able to attempt at least 2 to 3 MCQs from this portion. The next topic is the factors affecting enzyme activity. There are 6-7 main factors which are affecting enzyme activity. Number one is the enzyme concentration. If you increase the enzyme, that is concentration of the enzyme is increased, it is directly proportional to the velocity. If the substrate is provided and much of the substrate is available, if you increase the enzyme concentration, there will be increase in the velocity. So there is a direct relationship between enzyme and the velocity based on the concentration. Second is the substrate concentration. So if you have lot of enzymes available and only a few substrate is available, and if you increase the substrate concentration, there will be increase in the velocity. But it is hyperbola graph. That is, hyperbola mean like इस तरीके से ग्राफ बनेगा. ठीक है, just imagine, for example, this line is the hyperbola. तो if you are increasing the substrate increase, यहाँ पर आकर substrate increase हो जाएगी और फिर substrate constant हो जाएगा, velocity constant हो जाएगी. By increasing further substrate concentration, there will be not change or increase in the velocity. Reason क्या है कि सारे enzymes utilize हो जाएंगे, active sites जो utilize हो जाएंगी. Similarly, temperature, if you increase the temperature, there will be increase in the velocity. It is V, it's not T. So increase in temperature, or vice versa, you can see that if increase in temperature, there will be increase in velocity, but it is only up to a certain limits. और उसके बाद लिमिट्स के बाद, फॉर एग्जांपल आपने 5 से शुरू किया, 10, 20, 30, 40 और 50 तक मैक्सिमम गया और उसके बाद एकदम से डिक्लाइन हो जाएगा. दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 to 40 है. उसके ऊपर जैसे 50 से ऊपर लेकर जाएंगे, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और वेलोसिटी सारी या रिएक्शन ऑफ द एंजाइम वो जीरो हो जाएगा. देन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम concentration, substrate concentration, temperature is very important. How the product concentration is important. Sometime reaction 1, reaction 2, reaction 3, reaction 4, reaction 5, उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बन रही है वो प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रही है and too much product is formed. That product will go back and inhibit the first reaction. So sequence of the enzyme reactions में product concentration अगर increase होगी तो वो feedback inhibition cause करेगी. pH is, in fact, we are providing more ions. So if you are increasing the pH, you will see the increase in velocity. It is directly proportional. Against, it's a bell shaped. If you further increase the pH to 8, 10 or 4, या जो भी उसकी pH है, minor change अगर आप करेंगे तो उसकी velocity में increase होगी. But after some time you will see that there is sudden decline, enzyme denature हो जाएगा. There are different enzymes. Optimum pH 6 to 8 होती है. पेपेन की फॉर एग्जांपल 1 to 2, पेप्सिन की 1 to 2 है, स्ट्रांगली एसिडिक pH है. एसिड फॉस्फेटेजेस की 4 to 5 pH है. अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस की pH 10 to 11 स्ट्रांगली अल्कलाइन pH होगी. Similarly, the next factor which is affecting the enzyme is activator of the enzymes. That is, there are some enzymes which involve magnesium, calcium, iron, nickel, cobalt. These are the activators. These are known as cofactors or coenzymes. And based on their activators, the enzymes can be categorized into metal activated enzymes or metalloenzymes. Metal activated enzymes, for example, ATPase,
जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था, उसमें मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट मेटल एंड कैल्शियम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टू metals which are involved in the functioning of ATPase. So that's why it is known as metal activated enzyme. Metallo enzymes जो हैं, for example xanthine oxidase is involved in the uric acid production, प्यूरिन pyrimidine मेटाबॉलिज्म के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो xanthine oxidase जो है, इसमें मोलिब्डेनम या MB जो है, it is tightly bound with the metalloenzyme xanthine oxidase, which cannot be separated. It is covalently bound. That's why such type of enzymes are known as metalloenzyme. Without this molybdenum or whatever the element or metal present here, enzyme cannot work properly. Similarly, time is also very important factor. If you increase the temperature, if you increase the pH, less time is required to conduct the to produce the product from the substrate. If you decrease the pH and temperature, enzyme will work slowly. That's why the time is also very important. इस factors affecting enzyme activity के अंदर भी कुछ important points हैं, वो पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, उसकी बेस के ऊपर आप MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? नंबर 1, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन which is directly proportional to the velocity of the reaction. So substrate which is directly proportional to velocity of the reaction within a limit range of substrate. Rise in temperature is also directly proportional to velocity up to limit, then sudden drop हो जाती है। Similarly, optimum temperature enzyme का कितना है? 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। टैग डीएनए पॉलीमरेज, एडिनालेट काइनेज, आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है, all the enzyme work best at 35 to 40 and after 50 become denature except, नीचे आपको एग्जांपल्स दी हुई होंगी, उसमें टैग डीएनए पॉलीमरेज और एडिनालेट काइनेज दिया जा सकता है। These are the two enzymes which can work at even 100 degree centigrade. Similarly, generally above 50 degree centigrade enzyme gets denature. Certain surgeries carried out at low temperature because क्यों? हम चाहते हैं कि उसका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाए। मेटाबॉलिक रेट कम करने के लिए हमें उन एंजाइम की एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। सो सर्जरीज को आप 5 डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंडक्ट करेंगे तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाएगा। इंक्रीज इन पीएच इंक्रीज रिएक्शन, दैट इज इंक्रीज इन पीएच। अगर आप इंक्रीज इन पीएच कर रहे हैं, इट मींस दैट यू आर प्रोवाइडिंग मोर हाइड्रोजन आयंस इन द लिमिट्स। ये इंक्रीज करेगी वेलोसिटी को, देन इट सडनली ड्रॉप्स। ऑप्टिमम पीएच 6 to 8 होती है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की। पेप्सिन की 1 to 2 है, ये एक प्रेसिडेंस है जो कि स्ट्रांगली एसिडिक है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। एसिड फॉस्फेटेज 4 to 5 है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज 10 to 11 pH है। सो अगर आपसे इस पोर्शन से ये पूछा जाए कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज वर्क बेस्ट एट 1 to 2, 4 to 5, 10 to 11, 6 to 7, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अल्कलाइन फॉस्फेटेज की पीएच 10 to 11 है। हाइड्रोजन आयन इन्फ्लुएंस the ionic charges of the amino acids of the active site. In fact, when you increase the pH, you are providing more hydrogen ions. So more hydrogen ions, in fact, what they are doing, they are changing the amino acids which are present in the active site. Active sites के अंदर जो amino acid residues present हैं, उनकी आप ionic charge को change कर रहे हैं। So if you increase the hydrogen ion, it will to some extent increase the velocity of the reaction, but after some time the velocity of the reaction or the product formation suddenly drops और enzyme denature हो जाएगा, ये उसकी active site denature हो जाएगी। Product जो है हमारे पास, product concentration inversely proportional to the velocity of the reaction. Inversely proportional, that is, if you increase the product, enzyme activity or velocity of the enzyme will decrease. So it is not directly proportional, it is inversely proportional. और इसके अंदर example जो है concept of feedback inhibition है जो हमने पहले discuss की है। एक्टिवेटर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट मेटल एक्टिवेटर एंजाइम जैसे मेटालो एंजाइम्स हैं, एटीपीएस, मैग्नीशियम, कैल्शियम इसके अंदर इन्वॉल्व है। सिमिलरली मेटालो एंजाइम्स में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेटेज एंड कंटेन जिंक। इसके अंदर मेटालो एंजाइम्स के अंदर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के अंदर सेंटर के अंदर जिंक प्रेजेंट होता है और वो कोवलेंटली बाउंड होता है और उसकी बेस के ऊपर फर्दर इस एंजाइम जो है वो वर्क कर रहा होता है। सो एक्टिवेटर इफेक्ट किस तरह होता है? एक्टिवेटर्स क्या है? दैट इज एंजाइम अवेलेबल है, एंजाइम विल नॉट वर्क अनलेस एक्टिवेटर इज प्रोवाइडेड। सो एक्टिवेटर्स में अमूमन मेटल्स आ जाती हैं, कोफैक्टर्स आ जाते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप्स आ जाते हैं। एक्टिवेटर्स के अंदर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक्टिवेटर्स के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम अगर इन्वॉल्व है, कैल्शियम मैग्नीशियम्स आर द मेटल्स। सो ATPase इज द एंजाइम, such type of enzymes are known as metal activator enzymes.
अदर वन द एंजाइम्स जिसके अंदर मैग्नीशियम कैल्शियम की जगह कोई और मेटल फॉर एग्जांपल जिंक इन्वॉल्व है और वो कोवेलेंटली बॉन्ड है इन द सेंटर ऑफ द एंजाइम, सच टाइप ऑफ एंजाइम्स आर नोन एज मेटालो एंजाइम्स विदाउट विच they cannot work properly or they will not work either. So alcohol dehydrogenase is one of the example. Carbonic anhydrous is another example in which the zinc is involved. So xanthine oxidase involves iron, ferric and copper, which is present in the center of the enzyme and they are covalently bound with the enzymes. Light and radiation inactivate certain enzymes due to peroxides. Light जो है peroxides बनाएगी कुछ enzymes को inactivate कर जाती है. Similarly radiation like UV light radiation जो है वो salivary amylase को inhibit करती है. Now, active site and its silent features. Active site क्या होती है? For example, if this is the enzyme, you can see this is the site in which there is a green color pigment is present. This is the substrate जो यहाँ पर हमने green color pigment दिखाया है और ये active site है. Active site is a site in which the substrate gets attached with the enzyme and becomes the product and converted to product. So, active site की definition क्या होगी? Active site is the region of an enzyme where substrate molecule binds and undergo a chemical reaction. So all the enzyme is not involved in the substrate binding and product formation. Only a small portion of the enzyme is involved in the substrate binding and it can convert the substrate to product. ये यहाँ पर क्या होगा? The active site consists of amino acids. यहाँ पर specific type of amino acids होते हैं. You can see here जो कि substrate को temporarily bind करते हैं and residues that catalyze a reaction of that substrate. Catalytic site की भी हम इसको कहते हैं. Active site is also known as catalytic site. इसकी कुछ properties हैं. Active site की कुछ properties हैं. 6-7 properties हैं. वो कौन कौन सी हैं? Number 1, active site जो है consist of catalytic residues, for example which are far from each other. For example, lysosome के अंदर active sites के अंदर जो residues हैं amino acid present हैं वो 35, 52, 62, 63 positions के ऊपर हैं. It means that one of the amino acid is present here, second is here, third is here, fourth is here. They are far from each other. लेकिन जैसे अगर active site के अंदर fourth dimensional या quaternary structure बनाएंगे तो these amino acids come very close to each other and they construct an active site where the substrate will get attached. So in sequence के अगर हम देखें तो they are far from each other, but in active site they are very close to each other. Number 2, active site is flexible so that substrate can get attached with the active site. Generally active sites जो हैं उसमें substrate binding हो रही होती है और वही catalytic site भी होती है. Generally यही हम यहाँ पर बात दोबारा कर रहे हैं. Coenzymes, cofactors are part of active sites. That is, अगर यहाँ पर ये एक्टिव साइट है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड करना है तो यहाँ पर या यहाँ पर कहीं को एंजाइम मेटल्स अटैच होगा, कोफैक्टर्स अटैच हो जाएगा, पैराडॉक्सल फॉस्फेट अटैच होगा, पीएलपी, मुख्तलिफ एंजाइम्स के मुख्तलिफ कोफैक्टर्स को एंजाइम्स हैं वो एक्टिव साइट के ऊपर ही बाइंड होंगे. सो दैट्स व्हाई कोएंजाइम्स कोफैक्टर्स आर द पार्ट ऑफ active site. So this is the fourth property of the active site. The fifth one is substrate bonds with active site covalently. जो सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल हियर दिस इज द सबस्ट्रेट, ये एक्टिव साइट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इस कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के अंदर अमीनो एसिड्स जो कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव साइट्स के अंदर वो सीरीन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लूटामेट, टायरोसिन है. सो इनके अंदर सीरीन इज वन ऑफ द अमीनो एसिड जो कि हमने बोल्ड और येलो किया है. इट इज व्हाई इट इज बोल्ड और येलो? बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इन ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स की एक्टिव साइट के अंदर सीरीन इन्वॉल्व होगा. सो दीज आर द 5 properties of the active sites which you should remember. Inhibition. So there are different type of inhibitions. कौन सी inhibitions हैं उनको हम पहले देख लेते हैं. Reversible inhibition. Reversible inhibition further categorized into 3 types: competitive, non-competitive, uncompetitive inhibitions. Reversible inhibitions के बाद ये वो type है reversible inhibition in which the enzyme will gets inhibit, लेकिन ये रिवर्सिबल है. इट कैन वर्क अगेन. इनहिबिटर जो रिमूव हो सकता है. इरिवर्सिबल इनहिबिशन वो है जहां पर इनहिबिटर बाइंड होगा, कोवेलेंटली टाइटली बाउंड होगा और इनहिबिटर रिमूव नहीं होगा, एंजाइम दोबारा वर्क नहीं कर सकता. सच टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन इज नोन एज इरिवर्सिबल इनहिबिशन. देन सुसाइड इनहिबिशन. इसमें ये जो इनहिबिटर होता है या इसके अंदर जो इनहिबिटर होते हैं, ये इनहिबिटर अपने आप को केमिकली मॉडिफाई करता है. इस तरह मॉडिफाई करता है कि एंजाइम सुसाइड कर देता है. दैट इज मोर पोटेंट इनहिबिटर बन जाते हैं और एंजाइम सुसाइड कर जाएगा. एलोस्टेरिक इनहिबिशन ये होती है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द एंजाइम और ये रेड पोर्शन एक्टिव साइट है,
तो यहाँ पर कोई पोर्शन जो ब्लैक है इट इज फार फ्रॉम द एक्टिव साइट, लेकिन कोई इनहिबिटर यहाँ आकर बाइंड हो, फॉर एग्जांपल इस पोर्शन में आकर बाइंड हो और वो एक्टिव साइट को तब्दील कर दे, सो एलोस्टेरिकली एंजाइम की कन्फर्मेशन ही एक्टिव साइट की तब्दील हो जाएगी और सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड नहीं होगा। हालांकि इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं हो रहा, लाइक रिवर्सिबल इनहिबिटर एक्टिव साइट के ऊपर आकर बाइंड होते हैं, कंपटीशन होता है यहाँ पर या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। लेकिन एलोस्टेरिक इनहिबिटर के अंदर जो है वो रिमूव अदर साइड ऑफ द एक्टिव साइट जाकर बाइंड होगा और एक्टिव साइट की कंफर्मेशन को चेंज कर देगा। एंजाइम इनहिबिशन बाय ड्रग्स, देयर आर सम ऑफ द ड्रग्स। सो वन बाय वन हम रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर देखते हैं केएम के ऊपर वीमैक्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। सो रिवर्सिबल इनहिबिशन में केएम ऑफ द एंजाइम विल इंक्रीज, वीमैक्स विल गेट अनचेंज्ड। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है कॉम्पिटिटिव में उसमें केएम अनचेंज होगी, वीमैक्स डाउन हो जाएगी या डाउन रेगुलेट हो गया, या अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में केएम डी मैक्स दोनों डाउन हो जाएगी। सो दीज आर फ्यू ऑफ द केएम वी मैक्स की इन टर्म्स में, और यहां से आपके पास एमसीक्यूज बनते हैं। इन द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वी मैक्स इज इंक्रीज्ड, केएम इज अनचेंज्ड, केएम इज डिक्रीज्ड, वी मैक्स एंड वी केएम बोथ आर डिक्रीज्ड। तो इस किस्म की ऑप्शंस दी जाती हैं और एमसीक्यू बनाया जाता है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है उसमें क्या होगा, iodoacetate, this is the inhibitor, papain is the enzyme, ये इसके साथ कोवेलेंटली बाइंड होगा। सिमिलरली साइनाइड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, साइनाइड इज लाइक अ टॉक्सिक कंपाउंड, ये क्या करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ बाइंड करेगा, इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो साइनाइड इफ वंस inhibit the cytochrome, ETC will be inhibited और डेथ हो जाएगी। Similarly, iodoacetate will combine with papain, covalently bind करेगा, irreversible inhibition होगी। Suicide inhibitor में हमने कहा more potent inhibitor, for example, alloxanthine inhibits exogene, लेकिन alloxanthine converted to allopurinol, allopurinol is more potent inhibitor for the xanthine oxidase. Such type of inhibition is known as suicide inhibition. Similarly, another example is 5-fluorouracil, 5-deoxyuridylate एक हमारे पास इनहिबिटर था, it is converted to more potent inhibitor for the thymidylate synthase enzyme. Similarly, हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन बाय ड्रग्स हैं, उसमें एचएमजी कोए रिडक्टेज जो कि हाइपरकोलेस्टेमिया या कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है। हम हाइपरकोलेस्टेमिया की केस में स्टैटिन्स ड्रग्स देते हैं, स्टैटिन्स जाकर एचएमजी कोए को रिडक्टेज, लिपिकेट फॉर एग्जांपल एचएमजी कोए रिडक्टेज को जाकर इनहिबिट कर देगी और कोलेस्ट्रॉल डाउन रेगुलेट हो जाएगा सिंथेसिस। टीनोफर या एमिरेटेबल टेबाइन जो है, ये हमारे पास दो ड्रग्स हैं जो कि ब्लॉक करती हैं एचआईवी रेप्लिकेशन को। आरएनए पॉलीमरेज जो होगा एचआईवी का उसको ब्लॉक कर देंगी और रेप्लिकेशन ब्लॉक होने की सूरत में हम एचआईवी को टू सम एक्सटेंट ट्रीट कर सकेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द इनहिबिशंस टाइप्स और उनकी केएम के वीमैक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, रिवर्सिबल कौन सी हैं, मोर पोटेंट इनहिबिटर्स कौन से हैं, एंजाइम्स कौन सी हैं, उनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, ये आपने याद करना होगा। नाउ mechanism of enzyme actions, there are 4 possible mechanism of enzyme actions कि enzyme in fact substrate के साथ bind करके product किस तरह बनाता है। So one of the theory is that acid base catalysis, for example ribonuclease, इसके अंदर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर बना सकते हैं। सिमिलरली सबस्ट्रेट स्ट्रेन यानी कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा और बॉन्ड ब्रेकअप कर लेगा। कोवेलेंट कैटालिसिस, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कोवेलेंटली बाइंड होगा और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स लेन देन करके या गिव एंड टेक करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंट्रोपी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एसिड बेस कैटालिसिस, अगर आप देखें हिस्टिडीन को, ये प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। हिस्टिडीन इज आल्सो प्रेजेंट इन एक्टिव साइट, हिस्टिडीन कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल इफ इट इज प्रोटीन। सिमिलरली टायरोसिन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो एसिड्स के तौर पर बिहेव करता है। सिस्टीन के अंदर एसएच ग्रुप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सिस्टीन इज आल्सो, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कैटालिटिक साइट और एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स। सबस्ट्रेट स्ट्रेन क्या होगा कि जिस वक्त एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करेगा। एंड फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लाइसोजाइम की एक्टिव साइट इस बॉन्ड के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करेगी और ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। सम ऑफ द हमारे पास सबस्ट्रेट स्ट्रेन जो सबस्ट्रेट स्ट्रेन डालने वाले ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं लाइक लाइसोजाइम, ये क्या करते हैं, इसके अंदर दोनों नेचर्स होती हैं। एक तो एसिड बेस
एसिड बेस नेचर भी होगी, जो ये यहाँ पर एक्टिविटी करके प्रोडक्ट बनाता है, और दूसरा ये स्ट्रेस भी डाल रहे होते हैं. सो सच टाइप ऑफ एंजाइम्स आर वर्किंग ऑन बोथ द mechanisms to convert the substrate to the product. Similarly, active sites जो है, it can be nucleophilic or electrophilic. That is, it can attack on the substrate, it can donate proton, it can get electron. So nucleophilic, electrophilic जो अटैक्स होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, उसकी वजह से भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है. एंट्रोपी क्या है? अगर सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, वो खुद ब खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन दैट रिक्वायर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और एनर्जी. When the enzyme is present, enzyme substrate complex बन जाता है, many fold, several folds catalysis increase हो जाती है. That is, product बहुत जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगा. एंट्रोपी को आपने डाउन कर दिया. So these are the 4 possible mechanism of the enzyme actions. How to attempt biochemistry MCQs? This is something very important, and I am giving you a very important way how to conduct or how to perform the MCQs, right? Choice आप किस तरह कर सकते हैं. Perfect ways like this. This is how you can select the right answer. But again and again you will find that this is the wrong one. Again, do it, but it's not possible in the exam. That's why we are giving you some of the MCQs. Please read the statement carefully and then read the answers. और उसके बाद आप choices और फिर उसके बाद आप आंसर बताएंगे. At the end of the every MCQ, I will give you the answers. Enzyme specialized to cleave carbon-carbon, carbon-oxygen, carbon-nitrogen bonds, और अभी हमने पढ़े हैं थोड़ी देर पहले. This one, oxidoreductase, transferase, ligase, lyase. Which one is? The answer is lyase. An inherited disorder was observed in a 6-year-old boy. In one of the glycolysis enzyme glucokinase. What do you think glucokinase belongs to which class of enzyme? Hydrolase, oxidoreductase, transferase, ligase, lyase. अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि ग्लूकोकाइनेज का फंक्शन आपको पता हो, ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करना. तो ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप हो रहा है, तो कौन सी यहाँ पर हमारे पास चॉइस होनी चाहिए? Obviously it is transferase. In an enzyme reaction, if substrate concentration is lower than km of the velocity, km पहले तो आपको पता होना चाहिए, next lecture उसके लिए सुनिए please. km of the velocity, the reaction will be directly proportional to substrate concentration, not affected by enzyme concentration, nearly equal to Vmax, inversely proportional to substrate concentration, equal to half Vmax. तो अगर km से भी substrate concentration बहुत कम है, km वो वैल्यू होती है जहां पर हाफ Vmax अटेन होता है सबस्ट्रेट का, उससे भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो दैट इज, अगर हम एंजाइम को इंक्रीज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, एकदम से आपको Vmax अटेन हो जाएगी. एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर जनरली इनहिबिटेड बाय इनिशियल सबस्ट्रेट पाथवे, प्रोडक्ट रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एलोस्टेरिक एंजाइम्स, प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे. तो अब कुछ लोग जो हैं बच्चे, वो ये भी करेंगे कैटलाइज्ड बाय द एलोस्टेरिक एंजाइम, ये यहाँ पर है सबस्ट्रेट एनालॉग्स या इनिशियल सबस्ट्रेट ऑफ द पाथवे या प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. दिस इज मोर सूटेबल, बट दिस इज ओनली वन रिएक्शन. अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे देखें तो रिएक्शन 1, 2, 3, 4 और एंड पर जाकर जो प्रोडक्ट बन रही है वो रिएक्शन 1 को करेगी. सो दैट्स व्हाई ई इज द मोर एप्रोप्रिएट आंसर, प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे. Xanthine oxidase inhibition by allopurinol is characterized by uncompetitive inhibitor, irreversible, uncompetitive, suicide, allosteric. Xanthine oxidase किसकी एग्जांपल? Suicide inhibition cause करेगा, more potent inhibitor बनता है. Suicide dehydrogenase is a classic example of non-competitive inhibition, irreversible inhibition, competitive, suicide, allosteric. Succinate dehydrogenase किसकी एग्जांपल है? Competitive inhibition की. Which of the following is required for transformation reaction as coenzyme? कोएंजाइम के तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के लिए कौन सा कोएंजाइम इस्तेमाल होगा? कोएंजाइम A, Q, बायोटिन, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट, पैराडॉक्सिल अमाइन. The enzyme is, the cofactor is, coenzyme is पैराडॉक्सिल फॉस्फेट. Alcohol dehydrogenase products belongs to hydrolase, oxidoreductase, transferase, ligase, lyase. Alcohol dehydrogenase.
ऑक्सीडोरिडक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है. Number 9 question is transamination reactions are very important in urea cycle. Which of the following enzyme require transamination reaction? Coenzyme A, coenzyme Q, biotin, pyridoxal phosphate, phosphate. An important ETC enzyme, cytochrome oxidase, is inhibited by cyanide, is a typical example of. Cyanide से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिट हो रहा है, ये कौन सी इनहिबिशन है? नॉन कॉम्पिटिटिव, इरिवर्सिबल, अनकॉम्पिटिटिव, सुसाइड, एलोस्टेरिक इनहिबिशन. अभी हमने पढ़ा था, यस इट इज इरिवर्सिबल इनहिबिशन. वेरी मच राइट. आई होप दैट दिस लेक्चर इज फ्रूटफुल, आपके लिए प्रोडक्टिव होगा और आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी पार्ट ऑफ द चैप्टर को कवर करने में. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू लाइक दिस लेक्चर, subscribe my channel and hit the bell icon so that you can have the latest notification of the latest lectures. Thank you very much. Take care.